Let's sit comfortably. We will start with prayer. Eyes closed. Shoulders, neck relaxed, spine erect. Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Saha Viryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. And open your eyes. Okay, great. So let's start our session. The topic is very close to our hearts since we all are Yogaarthis, and we also want to know how do we want to go ahead with the study of yoga, which Sushama Kale madam is going to tell us and share with us today. So we can start. Yes. Thank you. Yes. Thank you, Sushama. Good evening, all. As we have selected this topic, and the topic named Career Prospects in the Field of Yoga. Selecting this topic has different aspects. Okay. So number one is that we all are human beings, and it's our nature that why should I do this? Why should I spend many of my years of my life in this? Why should I spend many hours of my day in this? Okay. Why should I spend all my Saturdays, Sundays learning yoga and listening the lectures and all? So the answer for it is there are many different perspectives you can adopt as your career perspectives or the parallel career perspectives, you can say. So we can use or we can have yoga as a parallel career for your existing career because you all are professionals, okay? So I know all of you, you know everyone, you know me. So from many years, we are associated with each other in different courses, for different lecture series, for different workshops, we are together. So the very first question comes in our mind, as I'm professional, I'm into one of the field, as I'm a doctor or I'm CEO of the company, I'm an engineer or I'm a practicing professional of one and the other thing. So what are the career opportunities for me in the field of yoga? Even if I cannot spend a whole time of my day or whole time of my month into yoga field, but still there are opportunities in the field of yoga. As we are in particular field. Suppose you, some of you are doctors. So we are dealing with the health, we are dealing with the diseases, we are dealing with the illnesses. Then we have very much opportunities. We have very much opportunities in the field of yoga. Suppose I'm working in the corporate firm, and then many of your students are working in the corporate firms and still they are into yoga. Then what are the opportunities for them? Definitely they have, because we all know workplace is the source of all these mental illnesses or the stress and anxiety things. So definitely we have opportunities on the workplace. Then suppose some of you are working in the colleges or the schools as teachers. So being a teacher, do we have kind of opportunities in the field of yoga? Yes, definitely, because yoga is very much useful in the field of education, because for education system, as we know, education is nothing to do with students or the academic progress. So education basically needs for all the domains of education system, starting from students, then teachers, then the head of the institutions and the parents.
and it is required for all the age groups. So there are opportunities in the field of education. There are some people, those who are in the field of industry, they are into the sales, they are into the marketing. So there, the public relationship or the relationship with our subordinates and superordinates, there we required this field. And for enhancing the productivity of our subordinates, or maintaining a good relationship with the with our clients, then there requires this yoga as a tool for enhancing all these things. Suppose there are people who are into the allied sciences, like they are in the field of naturopathy, they are in the field of Ayurveda, some are maybe in the field of just giving alternate therapies related, only simple like massage therapy, or there are some people who are into the field of physiotherapy. For them also, obviously, this yoga can become a parallel career opportunity, because as we all know, yoga is nowadays, many of those people, in fact, maximum people are using yoga for therapy. So the thing is that there are different career oriented people in this group, but still yoga can be the parallel career where you don't have to spend more time, or you don't have to look for the people other than your field where people require yoga. Okay, so wherever you are, you can fit that module, you can fit your knowledge in that field itself, right? Now, suppose starting from the very basic things, like when we started doing yoga, we were started doing yoga just for the purpose of our own health, just for the purpose of our own fitness, okay, to become a yoga sadhak. So we wanted to become yoga sadhak simply. Then once you enter into the field of yoga, we realize that, you know, this is the field where this is the ocean of knowledge, where I'm not only getting the practical aspect or the practical practices of yoga, but I'm also learning the philosophy. And this philosophy is nothing but the practical psychology for human life. So why can't we learn that, and why can't we give that knowledge to other people? Then there are opportunities in the field of yoga training. There comes the yoga training thing. So you can start taking students, you can start taking participants where you can help them, you can facilitate them to build up their own health or to maintain their health. That means what? You can start with your own small, at home itself, you can start with your own classes. And now due to this COVID, we all have become techno savvy. So this Zoom or this Google Classroom or this Google video conferencing, all facilities we know, we use that. So this world has become so small because of this technology, right? So in this small world, we can immediately enter into the field of training. So basically, I'm here to just give you the glimpse about the career opportunities. So wherever you require any personal help, you can definitely come to me. I will definitely guide you about that. But here in this platform, I would like to tell you that whenever you want to start with giving training to the people, you should know what are the things, what are the necessary things you need to talk to them before that. Their consent, their health problems, basically their age, their food habits, their daily schedule. So we need to talk to them. That means that consultation part also will get included into it. Means what? You cannot conduct a session for 10 people every day in the same, with the same atmosphere, with the same instructions. Definitely you cannot, because yoga is meant, it is a subjective science, right? So that means we have to consider each individual individually, differently, separately, right? So we need to understand individual problems. We need to understand the individual schedule of the person, his likings, his capacities and his limitations.
then you can plan that, the module you can plan. Otherwise, it will become very, very, very much monotonous. So we need to, if you are entering into the field of yoga training, then you should have that flexibility in your training, in your teaching, giving instructions also, where you can make the module tailor-made as per the requirement of the individual person. So that kind of flexibility very much required. Then after yoga training, suppose we are entering into therapy, because as there are many of my students, those who have passed MA, master's degree in the field of yogic science, some are still doing or pursuing master's degrees, some are doing PhDs, or some are already in the field of training. If they want to continue their career in the field of therapy, so here we need to take some precautionary measures, because see, first of all, there are limitations for yoga therapy. We should know that. So limitations are there in every field, basically for the in the field of yoga. So as a therapy, when we consider yoga as a therapy, so there are limitations. So very first limitation is we will not make any false promises to the patients. See, because as a therapist, the patients will come to us. Okay, so we will not be doing any kind of false promises like yoga is a magic, yoga is a magical science. You cannot tell them. You should not tell them about that. So you should know the limitation of yoga therapy. Then comes the actual therapy giving. And if the person or the patient is suffering from one and the other disorder or the disease, then we need to take a support of a person who is in the field of medical science or who is doctor by profession. See, because we heard many of the news, like there are many fake therapies are going on. People are doing this kind of therapy, and due to that, patients suffer. So we should not end up into that kind of news. So that's why, first of all, we need to take consent from the patient. We need to have a supportive team in our panel if you are starting with the therapy. So at least one or the two doctors we need to have, where they will see the patient. They will tell us that his or her medical conditioning, and according to that, we can give them therapy. See, because as a therapy, we know what are the things we'll give to the patient. The very important thing is diet. We start with diet. We'll understand what is their diet schedule or what is their diet habits, and then we will suggest them. That is one thing. Secondly, we will give them kriyas. Okay. See, because in therapy, kriya, diet, physical practices, and counseling, these 4 to 5 factors are important basically for this therapy purpose. So before giving kriyas or before giving some advanced or even simple practices to your patients, you should thoroughly know his medical conditioning or her medical condition, and we need to stop ourselves from giving such practices which are not useful but which may be harmful. So the slogan of yoga therapy, you can say, is if it is not useful, that is okay, but it should not harm the patient. Even if your therapy is not useful for the patient, that is absolutely fine, but it should not harm. And being a yoga therapy, you need to follow a very basic key, or the simple and the primary key for yoga therapy is relaxation, where you do not require or you are not taking any kind of risk into that. So relaxation is the key for yoga therapy. Many of students, you know that, right? So first we will be relaxing them. Then we are making them aware of their own problems, their own capabilities, their own limitations. So here comes yoga counseling.
So if you immediately enter into therapy and you just take a paper and you suppose start giving them instructions, morning at this time you should wake up, then immediately you start taking this liquid or that kind of food, and then you start doing 1, 2, 3, 4, 5, 6 these numbers ka asanas. So it is not good. It is not like objective patient. Na? So every patient, every participant, every person is individual. So here this counseling comes. So as we are yoga teachers, we are very, very responsible. And when yoga teachers become yoga counselors, the point which we miss from our mind is that we are yoga teachers, first of all. So when you enter into the counselor's role, you should not remember that you are yoga teacher. You should not forget that you are yoga teacher, and you should not forget that you are yoga sadhak, first of all, right? So being a yoga teacher and being a yoga therapist, now you are becoming yoga counselors. So first of all, I'm telling you the roles, the different roles in the field of yoga. Then there are different opportunities, right? So being a counselor, what are the things we need to understand? We need to understand the psychological terminologies as well, right? Many times it happens that we are learning or we are giving counseling with the help of yoga or with the help of yogic concepts. Then why there is necessity to learn what do you mean by mind, or what do you mean by psychology? What are these disorders, and what are the personality related traits or personality types? But we need to really know these terminologies, because we will be dealing with the people, those who are in the modern era, those who have not learned yoga before, those who have not learned yoga therapy before, right? So being a counselor, you should know the Western terminologies as well as the Indian terminologies for psychology. And being a counselor, we should be very, very soft-hearted or a kind-hearted person. And that will happen only if we will not forget that we are yoga teachers. Okay, fine. Then once you are yoga counselors, then yoga counselors, yoga therapist, yoga teacher, and yoga sadhak, then you can enter into the field of research, basically. So being a yoga researcher, then which are, first of all, we need to develop an attitude for yoga researcher. We need to become researcher, first of all. And being a researcher, very important thing we should keep in our mind, that if you become researcher, you want to develop an attitude of researcher, you should not have faith on the something like a module of yoga or which you are claiming. You should not have faith on that. If you have complete faith on yogic practices, then you cannot become yoga researchers. That means what? The critical analysis part should come in your practice. That means you should doubt the practices. You should demand the evidences for the yoga practices, right? So that kind of yoga researchers or the researchers' attitude you need to develop to become researcher. So as we have seen, there are 4 to 5 stages, from yoga sadhak to teacher, then from teacher to therapist, then counselor, and then researcher. Now we'll come to understand about the career opportunities in these fields. Okay. So first, as a yoga teacher, you can start your own studio. You can, abhi studio word has become so famous. पहले हम बोलते थे कि yoga class, then we used to say yoga school. Now that yoga studio word has become so famous, right? So
Being a yoga teacher, you will start conducting classes. You can start your own classes, and requirement is there. As we are in India, we know the condition of population. So there are requirements of yoga teachers in the society, and good yoga teachers, better yoga teachers, you can say. और जैसे मैंने कहा, due to this COVID, all these technologies and Zoom, उसकी वजह से the world has become so small, and there are many opportunities for Indian yoga teachers worldwide. Because Indian yoga teachers, they have their pronunciations are different. Their all the words, when they use Panchakosha, when they immediately connect the terms or the practice with some of the sutra or some of the shloka, it attracts people and it connects. Attract is a wrong word actually. So you can immediately get connected with the practitioners or your teachers. So that connection will get established. And it is not about only your connection with the student, but their own connection with their own physiology, their own psychology. That connection will get established. And that is possible for Indian yoga teachers. So these are, for being a yoga teacher, there are many opportunities. And not only you can start your own studio or class, but in the field of education, you can enter as a yoga teachers. See, because we all know the stress level is very high nowadays. Even small kids, they are suffering from one and the other anxieties, right? So you in the schools, you can approach, and if, there are many schools, they have started with yoga for children. They have started with yoga for academic performances, yoga for memory and concentration, right? And yoga for the physical health or the muscular fitness, yoga for the motor movement which are required in those age, right? So in schools, you can go and approach, and for that purpose, the proper certification, if you have done that, then definitely they will select you for that. And that doesn't require that you need to go and do full-time job. Even if you just propose them that weekly once I will come or my team will come and we will take such, conduct such a type of sessions. And for that purpose, we need to prepare a proper module, proper presentation, and we need to give that. So preparing module for a student for different objectives is altogether a kind of task which you will learn through your own practices. And your own practice and your teaching to the students is your wealth. So that is your wealth. So when you teach one participant, one student, and when you after one, then second, third, that way, if you go reach 100 students, that means you are very wealthy because you have 100 different individuals and their different psychology, their different physiology, and their different illnesses and their likings, right? So your experience is your wealth as a yoga teacher. Not only in schools, but in, suppose we'll go forward in the corporates, or before that, we'll enter into colleges, suppose. So even college students, those are giving higher educations to students like degree colleges or the diploma or 11th, 12th, junior or senior, first year and second year and third year students. Even the management, like master students, like MBA students are there. Even in MBBS colleges, due to this UGC's notification or the amendment in the rules, now they have declared that 60 hours yoga course is compulsory for all higher educations or UG courses and PG courses. मतलब कोई भी डिग्री एंड मास्टर डिग्री पढ़ाने वाले कॉलेजेस है, फॉर देम 60 hours yoga course is compulsory for their students. So you can go and approach them. See, they are the institutions, those who are into the field of education, they are very busy people. So you need to go and you need to approach them. You need to go and tell them that I have a team or I have this module. I have studied this. These are my certifications.
So it's our responsibility, being a yoga teacher, it's my responsibility to go into society, to go into education system, and will tell them instead of demand, first of all, we need to we need to tell them about the problems into that age group, into that domain. So instead of giving solution directly, we need to make them notice about the problems in that domain. And as you all are yoga teachers, but at the same time, many of you are parents, right? So you all are dealing with your children. You know the different problems of different age groups, or there are some children in your family or in society. So you know their problems. No, problems are not only related to the physical health, but it is related to mental and emotional health as well. So why can't we make them notice or understand the problems first? So whenever you approach to the institutions, not only the education, but the corporate institutions also, we need to show them the problems are there in this domain, and then you will give them the solution. And your solution is yogic solution. Yogic doesn't mean ki sab chhod chhad ke sannyasi kind of. No, it has that integral approach. We know that it has that holistic approach. They don't have to change their lifestyle immediately. At least they will become aware of their lifestyle. That is the basic requirement of finding the solution. As we know, recognition is half the solution. So let them recognize what is their lifestyle and how they are playing with their body and their mind while going through this domain, right? So it's our job, being a yoga teacher, to make them understand. And then when we give them a solution, we give them a solution not only in the yogic basis, but also in the, we need to fit our yoga sessions in their timetable, because they are very busy people. Our children are more busier than us, right? They have school, then they have classes, tuition classes, then they have extra curriculum ka kuch na kuch classes. They're more busier than us. Then you need to fit these yoga sessions in their timetable, in their school's timetable if you approach school, in their college timetable if you approach college. And instead of giving yoga as yoga, directly yoga as yoga, only asana, pranayam, surya namaskar, no. You can integrate that with the other activities. Even you can integrate these activities with the music, with drawing teacher, with craft teacher, something like that. See, innovation, creativity, this is the first and the very foremost outcome after yoga practice. So once you are yoga practitioner, you become yoga teacher, so you have more creativity, right? So you need to introduce these concepts in a creative manner, correct? Otherwise, people will not accept it. Like, only yoga, ठीक है, yoga के आसन करने हैं, सूर्य नमस्कार लेना है. We have yoga in our curriculum. Every school and colleges will tell you, we have yoga in our curriculum. But सिर्फ आसन, प्राणायाम, क्रिया, उससे भी बाहर, how yoga is useful, वहां पे आप introduce कर सकते हैं yogic counseling. And yogic counseling is useful not only for the students, but for their parents, basically. Parent ka counseling, teachers ka counseling, very, very important. So now there are many schools. Even I stay in Thane. So in Thane also there are 2-3 schools. They are coming up with the different sale, which is named the psychological health, and where you can introduce yoga for psychological health. And yogic counseling, you can introduce yogic counseling in the philosophical counseling way as well. Because now, see, psychological counseling and philosophical counseling, these two are the different terms and different theory actually. But as we are in India, the philosophical counseling is actually the psychological counseling, right?
So you can introduce that way. So you need to first of all tell them what are the mental health related issues with the student. And when you are showing them the problems, you need to first of all research for it. You need to find out it. So always I used to tell my students कि if you are yoga teachers, you should be very, very techno savvy. बहुत बार लोग बोलते हैं कि योगा में आने के बाद मैंने मोबाइल वगैरह सब छोड़ दिया है, स्मार्टफोन यूज नहीं करता, I don't have email account, I don't use laptop, then it's very wrong. You cannot progress. You cannot understand the society's problem. Right? So you need to research then. To find out the problems, you need to start doing research. And once you start doing research, then you will definitely understand that there are many researchers who are doing good in the field of yoga. Good means what? Research. Doing research is a noble task actually. It's a noble task. But if you search, then you may find out that there are many government schemes for research. There are many government sectors, they are giving sponsorships to the research. They're giving funds to your research, right? So when you become yoga teacher, yoga therapist or yoga counselor, you need to take a support of research. Otherwise, you cannot prove your work. There are evidences required for your work, right? So for that purpose, research field is required for, even if you are only yoga teacher, you need to research. You need to find out what other researchers are doing in the field of yoga training. Okay. So when you enter into schools or colleges or any corporate sector for yoga training, you can introduce yoga counseling, and with yoga training and counseling, why can't you make your own research report or your own research proposal? Because you are yoga teacher or yoga therapist, and there are a number of participants with you where you are doing or you are applying your yoga. That means yoga will become applied yoga. If you will show them the pre and post results, then that evidence will support you to expand your module in other schools or other corporates, right? See, पहले ऐसा था कि कोई एक योगा टीचर बनता था and he becomes famous, और उसका चेहरा, उसके postures and people are just following him. But now, due to this technology and all, people are become very smart. People are becoming smart, and they are asking for the evidences. They are asking for the research reports. अगर लोग स्मार्ट बने हैं तो योगा टीचर्स और थेरेपिस्ट को भी स्मार्ट बनना पड़ेगा. People will not only see your face and will not come to you. They want evidences. They want your research reports, right? And we are so fortunate that people are there to listen us. We are so fortunate. Otherwise, आजकल कोई किसी की बात नहीं सुनता है. सबको मेरी आवाज सुनो का जमाना है. But we are yoga teachers, and we are so fortunate. There are 100 or 20, 30 people. They are coming. They're paying us just to listen us. So why can't we make a proper research thing with them? Why can't we introduce a workshop where initially कुछ parameters लेंगे, and parameters लेने के लिए we need to understand those terminologies first of all. We need to have a team where we'll have one doctor if they are very much about the physical element or physiology. Our research is about physiology or physical element. Then we need to have team with us. So that kind of platform you should prepare in schools, in colleges, and in corporate sectors. Other than that, there are very fancy opportunities in the field of yoga. Like nowadays, this yoga tourism has
becoming very much popular. Yoga tourism. That means people will go for retreat, and they will not just enjoy, but they will try to change their lifestyle in a different framework. That means for tourism, basically what we do once in a year, we go to some different place out of India, out of Maharashtra, out of state, and we just stay there. We try to find out the different cultures around us. But in yoga tourism, we will go out of our house somewhere. That means हमें घर को थोड़ा सा छोड़ के बाहर निकलना है. That is need. That is very much a necessity of human being. As we are yoga teachers, we are yoga professionals, we know that, we know the psychology of human being. हर एक human being को लगता है कि मुझे कुछ दिन ये सब छोड़ के बाहर जाना है. लेकिन they do not have a proper channel or platform. Then what they do कि वो बस छोड़ के यहाँ से yes, that I'll tell you. वो अलग-अलग schemes है, I'll tell you about that, Mukul. Okay? Yeah. What I'm telling, in yoga tourism, when people want to go out of their house, they want to go out of their regular routine, so where yoga tourism comes in picture. चाहे आपके घर से थोड़े ही अंतर पे हो, but you are leaving all your responsibilities at home or in offices, and you are going there, you are defining your own schedule, you are defining your own physiology and psychology into that. You are understanding the Indian culture or the yogic culture and the yoga philosophy, obviously. That is also an opportunity. As someone asked, Mukul asked here, kids, what are the earning into research? Yes, definitely. As there are many of my students, they are into MA Yoga Shastra, right? Or Masters or MSc, some are doing MSc and something like that. So after doing that, once you are a master, that means you have gone through, you have done your own one research proposal, right? That means you are eligible to become investigator for a research proposal. But definitely for that purpose, we need to have one academic or educational institute ka support with us, where you can apply a research proposal in ICSSR. ICSSR is the Indian Council for Research in the Field of Social Sciences. जहाँ पे सोशल, क्योंकि योगा जो है वो सोशल साइंस के अंदर आता है. ICMR is also there, जहाँ पे मेडिकल साइंस से रिलेटेड जो स्टूडेंट है या टीचर्स है, प्रोफेसर्स है, वो उनका रिसर्च अप्लाई कर सकते हैं. But otherwise also, there are many private limited companies जिनका CSR फंड से भी वो रिसर्च के लिए फंड्स देते हैं. So we need to approach them. क्योंकि फॉर सोशल कॉज अगर उनको कुछ इन्वेस्ट करना है या उनको कुछ फंड्स देने हैं, तो डूइंग रिसर्च इन द फील्ड ऑफ योगा इज ऑल्सो सोशल कॉज. तो उसका उपयोग डेफिनेटली हम कर सकते हैं इसमें. उसके बाद एट इंडिविजुअल लेवल, दिस वाज अबाउट द ग्रुप, कि हमें ग्रुप में काम करना है, इंस्टीट्यूशन में जाना है, उनको इकट्ठा करना है एंड ऑल. But suppose I am an individual, I am not that social, I cannot approach to the different institutions and corporates. Then what will I do? So there are again a field. Yoga training तो एक है ही, आप individual level पे training ले ही सकते हैं, but you can start entering into the field of yogic diet as well, right? So yogic diet together a different a stream, you can say. So but for that purpose, the requirement is what? Requirement is experience and experiment. As we know, yoga is an experiential science. एक्सपीरियंशियल साइंस है, लेकिन उसके जब भी हम एविडेंस जमा करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, डॉक्यूमेंट करते हैं, तो हमें एक्सपेरिमेंट की भी जरूरत पड़ती है, राइट? तो योगिक डाइट का मतलब यहाँ पे बहुत सारा निकल सकता है. अगर हम स्क्रिप्चर्स की बात करें, तो सिर्फ स्क्रिप्चर्स की आधार पे भी, विद द रेफरेंस ऑफ स्क्रिप्चर्स, यू कैन डिजाइन योगिक डाइट. विद द
And obviously, while designing a diet for a person, we need to understand his belief systems, his habits, his upbringing. वो बचपन से क्या खाते आ रहा है और उसका लाइफस्टाइल क्या है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट. तो इंडिविजुअल लेवल पे भी हम ये काम कर सकते हैं, जहां पे मुझे ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे मुझे इंस्टीट्यूशन का सपोर्ट नहीं है. आई एम अलोन एंड आई एम जस्ट इन द फील्ड ऑफ योगा एंड आई वांट टू बिकम योगा डाइटिशियन और डाइटेटिक्स में एंटर करना है. योगिक काउंसलिंग के लिए भी हमें, जैसे मैंने कहा फिलोसॉफिकल काउंसलिंग, योगिक काउंसलिंग, ये भी हम पर्सनल लेवल पे यू कैन काउंसिल. तो काउंसलिंग का मतलब क्या है वगैरह वगैरह, उसमें मैं एंटर नहीं करने वाली, बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है. काउंसलिंग डजंट मीन गिविंग एडवाइस और गिविंग सजेशंस और शोइंग देम अ वे. नॉर्मली व्हेन वी बिकम योगा काउंसलर्स वी ट्राई टू बिकम योगा गुरु. तो गुरु बनने की कोशिश हम नहीं करेंगे. वी आर काउंसलर्स लाइक अदर काउंसलर्स एंड बेसिकली बाय हार्ट वी आर टीचर्स, योगा टीचर्स बेसिकली, राइट. सो वी आर हियर टू जस्ट लिसन हिम और हर विथ ऑल आवर ईयर्स. हमारे कान, सभी कान खुले रख के हमें पहले तो उसको सुनना है. सो लिसनिंग इज द क्वालिटी वी नीड टू डेवलप टू बिकम काउंसलर. मैंने एक काउंसलर से मिली थी, मैं मतलब एक ऐसे ही किसी को पर्सनली, आई डोंट वांट टू डू दैट, लेकिन एक काउंसलर एंड हिज थ्रोट वाज लाइक, आवाज भी नहीं निकल रहा था. एंड ही सेड आई एम काउंसलर एक्चुअली ना, सो आई हैव टू स्पीक अ लॉट, सो माय थ्रोट इज ऑलवेज लाइक दैट, माय वॉइस इज ऑलवेज लाइक दैट. तो काउंसलर ने उल्टा कम बोलना चाहिए, ज्यादा सुनना चाहिए. ठीक है. तो जिनको सुनने की आदत नहीं है वो काउंसलर नहीं बन सकते, जिनको बोलने की आदत है वो काउंसलर है, वो टीचर बन सकते हैं. योगा टीचर्स में कैसे है, यू हैव टू गिव इंस्ट्रक्शंस, पूरा कंटिन्यूअस नॉन स्टॉप स्टार्ट टू एंड उसको इंस्ट्रक्शंस देने हैं, फ्रॉम टोज टिल टॉप ऑफ द क्राउन और हेयर हमें इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं, राइट. So if you are very much into speaking, then you cannot become counselors. So you need to listen him first. And here you can start. So यहाँ पे पहले, जैसे मैंने कहा, you need to do experiments first of all. Earning will come, definitely. लेकिन उसके पहले मेरे पास foundation क्या है? You should have that foundation. And that foundation will come after experience and experiment. And then people will definitely pay you. क्योंकि अल्टीमेटली जब भी हम करियर की बात करते तो हमें है कि करियर मतलब क्या, कि मुझे पैसा मिलना चाहिए. पैसा नहीं मिलता है चलेगा, नाम तो होना चाहिए मेरा. दो चीजें तो एटलीस्ट चाहिए मुझे, पैसा चाहिए या फेम चाहिए, दोनों में से एक चीज, राइट. सो इट डिपेंड्स, जिसका जैसा इंटरेस्ट है, जिसका जैसा रिक्वायरमेंट है उस तरह से. या बेसिकली व्हेन यू आर इनटू योगा, हमें बहुत बार दोनों भी मिलते हैं या कभी कभी दोनों भी नहीं मिलते. सो इट डिपेंड्स आप कैसे उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं. ठीक है. तो अभी यहाँ पे सब जन मुझे पहचानते हैं तो मैं एकदम फ्रीली बोल सकती हूँ आप लोगों के साथ. मेरे ऊपर बर्डन नहीं है यार, लंबा चौड़ा लेक्चर ले लिया करियर पर्सपेक्टिव का, एंड देन व्हाट अबाउट अर्निंग, उसका बर्डन मेरे ऊपर नहीं है आज. राइट, बिकॉज दिस इज माय होम ग्राउंड, मेरे ही सब लोग हैं तो मैं बोल सकती हूँ. ओके, चलो जोक्स अपार्ट. उसके बाद हम आएंगे थोड़ा सा स्पोर्ट्स या योगा फॉर स्पोर्ट्स, और फॉर स्पोर्ट्स में जिनको इंजुरीज होते हैं उनके लिए, और फॉर फिटनेस. जैसे मैंने सुबह भी आपके लेक्चर में कहा था कि फिटनेस इज अ डिफरेंट थिंग. फिटनेस इज रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर टास्क. एक मुझे काम करना है, उसके लिए मुझे फिटनेस चाहिए. सपोज मुझे माउंटेन चढ़ना है, ये मेरा टास्क है 2 महीने बाद, तो फॉर दैट पर्पज आई वांट फिटनेस रिलेटेड टू दैट टास्क. अगर मुझे दिन 1 हफ्ता या 15 दिन के लिए बस बैठ के काम करना है, उसके लिए भी मुझे फिटनेस की जरूरत है. सो डिपेंडिंग अपॉन योर टास्क वी रिक्वायर्ड फिटनेस. तो फिटनेस के लिए योगा का यूज हम योगा को कैसे अप्लाई कर सकते हैं. इट इज ऑल अबाउट अप्लाइड योगा, राइट. सो फिटनेस के लिए योगा अप्लाइड करते वक्त स्पोर्ट्स पीपल विल कम इनटू द पिक्चर. एंड ड्यू टू दिस खेलो इंडिया में 25 स्पोर्ट्स आर सिलेक्टेड, एंड उसके लिए
वी हैव मेनी, मतलब छोटे बच्चों से लेके बड़े एज तक या पैरामेडिकल रिलेट वाले भी लोग हैं जो स्पोर्ट्स में है, तो उनका फिटनेस के लिए हाउ योगा इज इंट्रोड्यूस्ड, एंड बेसिकली योगा के माध्यम से द इंजरी का जो रेट है वो रिड्यूस कर सकते हैं हम। क्योंकि मैंने लाइफ में कभी मेरे फर्स्ट फ्लोर पे रहते हुए भी स्टेप्स नहीं चढ़े, और मैं डायरेक्ट माउंटेन चढ़ने की अगर बात करती हूँ तो बाकी तो हवा भरने में चलेगा, यस यू कैन डू दिस, यू हैव दैट फिटनेस, आई विल डेवलप योर फिटनेस वगैरह, ठीक है, बट व्हाट अबाउट इंजुरीज देन? सो वी नीड टू गो स्लो, वी नीड टू गिव देम दैट awareness about their small joints and the breathing and stamina, muscle tone, ये सब हम उनको योगा के माध्यम से दे सकते हैं, ताकि अचीवमेंट कम हुआ लेकिन इंजुरी भी कम हुई, चलो चलेगा। तो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड फील्ड, जहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए, जैसे हम क्रिकेटर्स है या फुटबॉलर्स है या और भी कुछ अलग अलग गेम्स है, उसके लिए भी हम योगा को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं एडिशनली, और हो रहा है ऐसा। आप हमें सिर्फ वहां पे अप्रोच करना है, और मैंने जैसे कहा कि वाई पीपल विल लिसन यू, वाई पीपल विल बिलीव यू, सो यू शुड हैव एविडेंस, एंड एविडेंस चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए, हमें डॉक्यूमेंट करना चाहिए हमारा काम, जहां पे हम इंडियन लोग थोड़े से पीछे जाते हैं। हम क्या बोलते हैं, हाँ योगा से तो सब कुछ होता है, क्या जरूरत है एविडेंस की। ये इमोशनल लेवल पे जो हम सोचते हैं ना, उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल लेवल पे हमें लेके जाना पड़ेगा, दैट इज वन थिंग। उसके बाद देर आर wellness centers are coming nowadays in different cities. So how can you get associated with wellness center? Wellness ये शब्द प्रयोग ही मेरे ख्याल से योगा के लिए ही बना है, ऐसा हम बोल सकते हैं, राइट? इट इज योग बेसिकली, बट नाउ ये योगा, ये वर्ड से भी बहुत सारे लोगों को शायद तकलीफ होती है, इसके लिए वेलनेस, चलो कोई बात नहीं है। सो वेलनेस वर्ड हैज कम नाउ, तो वेलनेस सेंटर, तो वेलनेस सेंटर में फिर हमें क्या लगेगा, सो वी नीड टू हैव अ टीम जहां पे योगा एंड अलाइड साइंसेस आर इन्वॉल्व नाउ। एंड अलाइड साइंसेस में क्या होगा, तो एलोपैथी छोड़ के, अदर देन एलोपैथी ऑल अदर पैथीज आर ऑल्सो एक्सेप्टेड। सो इंडिया में और अभी इंडिया के बाहर भी देर आर मेनी पीपल, मेरे ख्याल से 50% लोग से भी ज्यादा लोग अलाइड पैथीज का प्रयोग करते हैं, एंड दे आर गेटिंग रिजल्ट्स। सो दैट इज ऑल्सो पैथी, उसको पैथी का ही अगर नाम दिया है, उसको पैथी का स्थान दिया है, तो देर इज अ साइंस बिहाइंड इट। दोज हु आर प्रोफेशनली स्टडीड देयर योगा, तो उनको तो सबको पता है कि इट इज अ साइंस। सो व्हाई कांट वी merge, or why can't we come together all some of the pathies, and why can't we enter into wellness centers? So wellness center में ये चीजें रहेगी, जहां पे आयुर्वेद है, जहां पे नेचुरोपैथी है, यूनानी सिद्ध थोड़ा सा साउथ में थोड़ा सा ज्यादा उसका उपयोग किया जाता है, बट अदरवाइज एज वी आर इन दिस स्टेट, तो यहाँ पे यूनानी सिद्ध का थोड़ा कम प्रयोग होता है, बट दैट इटसेल्फ इज अ साइंस अगेन। सो व्हाई कांट वी लर्न दैट, व्हाई कांट वी गेट बिकम एसोसिएटेड विथ ऑल द पैथीज टुगेदर एंड वेलनेस? पर्पस क्या है कि लोगों को रिजल्ट्स आने चाहिए, तो हम इकट्ठा क्यों नहीं हो सकते? तो वेलनेस सेंटर का कंसेप्ट जो आया है वो वहां से ही आया है, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने कहा था अदर पैथीज, तो उसमें फिजियोथेरेपी इज ऑल्सो वन वेरी फेमस ट्रीटमेंट फैकल्टी इज देयर। सो इन फिजियोथेरेपी definitely you will not become physiotherapist, that altogether is a different UG and PG course, मेडिकल साइंस रिलेटेड है वो, लेकिन उनको असिस्ट करने के लिए, उनको कॉम्प्लीमेंट्री प्रैक्टिस देने के लिए डेफिनेटली योगा टीचर्स विल गेट सिलेक्टेड। आपके सिटी में भी अगर आप आजू बाजू में देखेंगे तो कितने फिजियोथेरेपी के सेंटर्स खुले होंगे। सो व्हाई कांट यू अप्रोच देम? यू नीड टू गो एंड अप्रोच देम, इट इज अवर जॉब। घर पे बैठ के कोई आपके पास नहीं आने वाला,
आपको टाइम निकाल के थोड़ा सा वहां पे जाना पड़ेगा कि आई विल कम वंस इन अ वीक एंड आई विल डू दैट, एंड फॉर दैट पर्पज आई हैव एविडेंस, आई हैव सपोर्ट ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स. Or you can say कि I will give my service and we will do one research project for that. इस तरह से का भी प्रयोग आप लोग जाके कर सकते हैं. So my near to heart subject is basically research. तो उसके लिए मैंने एक मॉडल बनाया है actually, and the name of that model is प्रयास. It is a project for research in applied yoga and allied sciences. So under this banner, basically, we are trying to do research, give opportunities and take opportunities. It is give and take. It is a group activity, basically, where we will conduct workshops. We will see the effects of our practices. प्री एंड पोस्ट टेस्ट कैसे करने हैं, अलग अलग पैरामीटर्स को कैसे रिकॉर्ड करना है, वो सब जरूरी है. चलो हमने अभी योगा सीख लिया, फिलोसॉफी सब बाय हार्ट हो गई हमारी, स्क्रिप्चर्स हो गए. नाउ हाउ टू अप्लाई इट इनटू आवर डे टू डे प्रैक्टिसेस एंड इनटू द रिसर्च और क्योरिंग पर्पस. एंड फॉर दैट दिस रिसर्च इन द फील्ड ऑफ अप्लाइड योगा एंड अलाइड साइंसेस इज वेरी मच रिक्वायर्ड, एंड we are the sources for that. कोई भी लेमैन उठ के उसमें काम नहीं कर सकता. तो ये हमारा काम है बेसिकली. ये बेसिकली हमारा काम है कि हमें इस फील्ड को आगे लेना है. ऑब्वियसली जो इंस्टीट्यूशन लेवल पे है, जहां पे हमें पीएचडी तक पहुंचना है, और पीएचडी के बाद आप प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर बन सकते हैं एंड यू विल गेट फंड्स. लेकिन वो अकेला तो कुछ नहीं कर सकता ना. सो ही ऑल्सो रिक्वायर्ड सम टीम फॉर दैट. So why can't you become his co-investigator? Why can't you become his associated assistant or associate investigator? At least एक या दो, एक रिसर्च भी आपने कर लिया ना, तो आपको वो एटीट्यूड, वो प्रैक्टिस, वो सब हैबिट सब आप में डेवलप होगा. And very important thing is, I know that doing research is very painful task. But once you finish it, you will not stop yourself doing research again and again. So that is the beauty of this. ये ह्यूमन का नेचर है. पेनफुल बहुत होता है एक खातिर काम, लेकिन वो होने के बाद वापस वही करने का मन करता है हमें ना. तो ये रिसर्च के बारे में भी है. It is a very painful task at the beginning in the first research, but again and again we will do that once you finish one research. So I'll appeal you for that. And if personally, from my side, if you need any kind of support or any कुछ information, जितना मैं दे सकती हूँ, मैं definitely आपको देने की कोशिश करूँगी. Okay, so that's all. अभी भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से मैंने कोशिश की है कि as a career opportunity, you need to go and approach people. हम घर पे बैठ के, हमारे पास कोई नहीं आने वाला. तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें अपना काम करते वक्त पैरेलली यू कैन गो इन द सोसाइटी एंड यू कैन स्टार्ट दिस थिंग्स, एंड वी आर ऑलवेज देयर विथ यू. ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी. थोड़ा अलग टॉपिक था, पता है मुझे. आप लोगों को कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेरी है, तो आप पूछ सकते हैं. Job yes, Ganesh, you can ask. मॅडम, एक अपॉर्च्युनिटी म्हणून आपण योगाच्या कॉम्पिटिशन मध्ये जे जज असतात त्यांच्या ही पण एक अपॉर्च्युनिटी होऊ शकते ना. मग त्यासाठी काय करावं लागेल? जज रेफरी. येस, त्याला रेफरी. तो सगळ्यात जैसे गणेश जी ने पूछा कि हम योगा के कंपटीशन आजकल, ये भी एक अच्छा एक करियर ये है कि आप स्कूल्स या कॉलेजेस को जब भी अप्रोच करते हैं, सो दे वांट something which is competitive for their students or their staff, right?
तो वो वहां पे कंपटीशन करना, तो उसके लिए क्या लगते हैं, हमें जज लगते हैं और रेफरी लगते हैं. ठीक आहे. तो रेफरी जो होते, रेफरी आणि जज याच्यामध्ये फरक असतो गणेश, लक्षात. सो फर्स्ट अगर आप रेफरी बनते हैं तो आपको रेफरी का एक छोटा सा वर्कशॉप होता है, वो कंप्लीट करके आपको रेफरी का सर्टिफिकेट मिलता है. तो देर आर स्टेट लेवल एसोसिएशंस, इवन डिस्ट्रिक्ट लेवल एसोसिएशंस. जैसे ठाणे के लिए ठाणे रेफरी एसोसिएशन है, मुंबई का है, नवी मुंबई का है, पुणे का है, और महाराष्ट्र का रेफरी एसोसिएशन भी है. तो उनको अप्रोच करना पड़ता है. आप लोगों को किसी को, जसं गणेश तुम्हाला जर त्याचा काही अप्रोच हवा असेल तर मी डेफिनेटली तुम्हाला देईन. तो उनका वो एक एग्जाम होगा. एग्जाम के बाद यू विल गेट सर्टिफिकेट एंड दे विल, इफ देर आर कॉम्पिटिशंस दे विल कॉल यू. आपके एरिया में या बाहर भी कहाँ होगा तो आपको बुलाएंगे, और उसके लिए भी आपको पर आवर या पर ये कॉम्पिटिशन पैसा मतलब चार्जेस देते हैं, पे करते हैं वो. ठीक आहे. आणि जज मग फक्त जो असतो तो फक्त रेफरी नसतो, मग ही शुड हैव द प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन का बैकग्राउंड, उसका प्रॉपर. जैसे आप एमए कर ही रहे हैं, राइट, तो मास्टर्स डिग्री करने के बाद या पीएचडी करने के बाद आप जज तो बन ही सकते हैं. बरोबर. हाँ नरेश. नरेश आवाज येत नाहीये, ब्रेक होतोय. योगा मैं बताती हूँ. हाँ बोला बोलताय का. फॉर योगा थेरपिस्ट I'll write it. हाँ नाही मला लक्षात आलं. I'll write them. ठीक आहे. यू राईट इट ऑन द टेक्स्ट. तोपर्यंत आपण राजेश यू कॅन आस्क. गुड इव्हनिंग मॅम. मला फक्त ते योगा थेरपिस्ट विषयी थोडस अजून जास्त माहिती पाहिजे एक्झॅक्टली. आणि दुसरं काउन्सिलिंग आहे ना, ह्या डन बेसिक पर्सनल काउन्सिलिंगचा एक कोर्स केलेला मी, म्हणजे एक क्युरियोसिटी म्हणून केलेला. पण ते अँड व्हॉट इज द डिफरन्स, म्हणजे योगा काउन्सिलिंग आणि पर्सनल काउन्सिलिंग आपण जे करतो तर त्याच्यामध्ये काय थोडं म्हणजे खूप फरक आहे की इट इज. कसं असतं, देखो इन्होंने क्या पूछा की पर्सनल काउन्सिलिंग और मतलब बाकी पर्सनल काउन्सिलिंग म्हणजे तुम्हाला कुठलं काउन्सिलिंग म्हणायचंय. पर्सनल म्हणजे काय, सायकोलॉजिकल काउन्सिलिंग का. यू कॅन अनम्यूट राजेश. नॉर्मली जे पर्सनल प्रॉब्लेम असतात ना त्याच्याविषयी काउन्सिलिंग असतं. नाही पण ऍज अ सायकोलॉजिकल काउन्सिलर. येस असं म्हणायचंय का तुम्हाला. ते का बेसिक ओके. मला नाही म्हणजे असं बेसिक किंवा असं पर्सनल काउन्सिलिंग खरं तर म्हणजे आपण असं घरात काउन्सिलिंग करतच असतो की मुलांना काही प्रॉब्लेम आला आपण काउन्सिलिंग करतो, आपल्या रिलेटिव्हला काही प्रॉब्लेम आला म्हणजे असतंच ना की एखादा व्यक्ती असतो तो थोडासा म्हणजे शहाणा, चांगल्या भाषेत शहाणा, असं शहाणा म्हणजे अति शहाणावाला शहाणा नाही, एक शहाणा असतो की नॉर्मली आपण त्याच्याकडे जातो आपला प्रॉब्लेम घेऊन. दॅट इज पर्सनल काउन्सिलिंग. कदाचित असंच राजेशला म्हणायचं असेल. बट योगिक काउन्सिलिंग जेव्हा आपण म्हणतो ना तर ते प्रॉपर लर्निंग आहे, ते आपल्याला प्रॉपर तुम्हाला शिकावं लागतं. ते म्हणजे तुम्हाला सगळ्यात आधी तर सायकोलॉजीचं ज्ञान असायला हवं. म्हणजे सायकोलॉजी डझंट मीन तुम्ही सायकोलॉजिस्ट असायला हवेत, पण योगिक आपण जे योगाच्या आस्पेक्टने किंवा इंडियन कल्चरने आपण ज्याला सायकोलॉजी म्हणतो, अंडरस्टँडिंग द माइंड, व्हॉट इज माइंड आणि एव्हरीथिंग अबाउट माइंड, what is the role of mind in our day-to-day life, where it is and how to tackle with the different aspects of mind. हे सगळं योगामध्ये तर येतच ना राजेश, हे माहिती आहे आपल्याला. त्याच्यामुळे हा आपल्याकडे योगाचा आस्पेक्ट म्हणजे काय तर हा आस्पेक्ट असतो. एंड दूसरा थिंग, एज मैंने कहा कि वी आर योगा टीचर्स, तो हम हमेशा योगा टीचर ये नहीं भूलते हुए ही हमें काउंसलिंग करना है. सो सपोज आई एम योगा टीचर, तो मेरा काउंसलिंग किस तरह से होगा, पहले तो उसका सुनना है, वो तो अलग बात है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. सो आफ्टर लिसनिंग हिम, सो कैसे होगा, इसमें दो चीजें होती है. एक कैसे कि कोचिंग और काउंसलिंग. देखो ये दो ना आजकल बहुत मिक्सअप हो रही है चीजें.
आजकल ये कोचिंग भी चलता है ना, लाइफ कोचिंग या बहुत सारे ऐसे अलग अलग शब्द है, बराबर है. तो कोचिंग एक मतलब कोचिंग इज ऑलवेज फ्युचर ओरिएंटेड, यू कॅन से. काहीतरी मला अचीव करायचंय म्हणून कोचिंग असते. योगा काउन्सिलिंग अँड साइकोलॉजिकल काउन्सिलिंग इज पास्ट ओरिएंटेड. आदि तुमच्या आयुष्य, पहले तुम्हारे जीवन में क्या हुआ, क्या फोबिया है, क्या पहले के कुछ ट्रॉमेटिक कंडीशंस है क्या, वो अंडरस्टैंड करना इज साइकोलॉजिकल काउंसलिंग. तो कोचिंग क्या होता है, फ्यूचर ओरिएंटेड. साइकोलॉजिकल काउंसलिंग इज पास्ट ओरिएंटेड, बट योगिक काउंसलिंग इज पास्ट, फ्यूचर एंड प्रेजेंट ओरिएंटेड. सो दॅट इज द बेसिक डिफरन्स बिटवीन सायकोलॉजिकल काउन्सिलिंग आणि तुम्ही दुसरं कुठलं जे म्हणत असाल ते काउन्सिलिंग. ठीक आहे, तो ये समजना. तो प्रेझेंट मतलब आपण प्रेझेंट अँड फ्युचर म्हणजे हेयम दुःखम अनागतम. ठीक आहे, झालेल्या गोष्टीतून शिकायला पाहिजेच ना. त्यामुळे पास्ट, प्रेझेंट अँड फ्युचर ओरिएंटेड इज सायकोलॉजी, इज योगिक काउन्सिलिंग. हा बेसिक डिफरन्स आहे. ठीक आहे. नरेश, your question is what we have to do for yoga. Yes, even Rajesh, you asked about yoga therapy. So now जो लोग MA कर रहे हैं यहाँ पे, या मास्टर्स कर रहे हैं, या बाकी भी कोर्सेज कर रहे हैं, उनको अभी पता है कि फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग यू हैव, थोड़ा बहुत साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग आपको आया है. लेकिन थेरेपी के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इन डिटेल फर्स्ट ऑफ ऑल. क्योंकि थेरेपी, हमें पता है रूट कॉज इज एट माइंड, और हम लोग इझिली बोलते हैं हा माइंडला हँडल करायला मग काय आहे, मेडिटेशन आहे, रिलॅक्सेशन आहे, हे आहे आणि ते आहे, बरोबर आहे. लेकिन उसके इफेक्ट अभी शरीर पे आ गए हैं ना. द इफेक्ट्स आर इन बॉडी नाउ, the symptoms are in body. So at a time we are giving treatment to body and to mind. तो दोनों तरफ से आ रहा है ना वो ट्रीटमेंट. तो हम सिर्फ माइंड आणि ऐसा नहीं कर सकते हम लोग. तो हमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी डिटेल में पता होना जरूरी है. हर एक डिजीज, जैसे एकदम एग्जांपल हमने कर लिया डायबिटीज को, तो डायबिटीज के क्या क्या प्रकार है, डायबिटीज के शुरुआत के सिम्टम्स क्या होते हैं, कौन डायबिटिक हो सकता है, तो प्री डायबिटिक ये क्या चीज होती है, उसके मेडिकल टर्म में उसके क्या पैरामीटर्स हमें मेजर करने पड़ते हैं, कौन सा टेस्ट करना पड़ता है, ब्लड टेस्ट जिसको हम बोलते हैं, तो कौन से प्रकार का डायग्नोसिस के लिए टेस्ट करना पड़ता है, पैथोलॉजिकल टेस्ट क्या होते हैं, वो पैथोलॉजिकल टेस्ट को समझना. और फिर उसके बाद आता है कौन से ऑर्गन्स, और उस ऑर्गन को अफेक्ट करने के बाद बाकी रिलेटेड क्या ऑर्गन्स अफेक्ट होंगे और सिस्टम अफेक्ट होंगे. तो बिफोर गिविंग सॉल्यूशन वी नीड टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. तो प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करना ही 80% हो गया, और 20% आती है अपनी थेरेपी बाजने. क्योंकि बाकी आसन वही देंगे ना, आप क्या नया आसन बनाने वाले हैं क्या, नहीं. आप नई क्रिया डेवलप करने वाले हैं क्या, नहीं, बराबर है. आप नया कुछ मेडिटेटिव टेक्निक बनाने वाले हैं क्या, बना भी सकते हैं, नाम दे सकते हैं, बट उसका प्रिंसिपल्स तो हमारे स्क्रिप्चर से ही आया है. तो यू विल नॉट गोइंग टू इन्वेंट एनीथिंग. तो पहले तो आपको 80% आपका बीइंग अ योगा थेरेपिस्ट काम क्या होगा, उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना, उसका फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप वाला जो भी चीजें उसमें इन्वॉल्व है उसको अंडरस्टैंड करना, और फिर आगे आता है सोल्यूशन. तो वो प्रॉपर स्टडी है. जो लोग ऑलरेडी मास्टर्स कर रहे हैं उनको तो उनका अभी चल रहा है, उनको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, और धीरे धीरे उनके लेक्चर्स में समझ में आएगा. दोज हु आर जस्ट स्टैंडिंग एट द क्या बोलते हैं, फेंसिंग के पास खड़े हैं, and they are just listening this, I will tell them to just enter into that. कोई तो एक कोर्स में खुद को एनरोल करो, ताकि आप, और वो भी प्रोफेशनल लर्निंग वाला, जिस एकेडमिक, मैं तो बोलती हूँ एकेडमिक कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट. एकेडमिक कोर्स में आने के बाद हम बन जाते हैं स्टूडेंट, और स्टूडेंट फेज इज वेरी एंजॉयबल फेज, एंड यू विल लर्न एवरीथिंग आराम से. तो वो एक, बहुत सारे तो कर ही रहे हैं फिर भी. ठीक है. सो दैट इज अबाउट योगा थेरेपी.
बाकी योगा थेरेपी के जो कोर्सेस है या उसका सर्टिफिकेशन है वो कहाँ से मिलता है हमें, उसके कुछ सर्टिफिकेशन बॉडीज है, वहां पे कैसे अप्रोच करना है, हु इज एलिजिबल फॉर दैट, ये पूरा सिस्टम है। ये मैं अगर किसी को चाहिए तो मैं डेफिनेटली एक्सप्लेन करूंगी पर्सनली। यस वैशाली। हा नमस्कार मॅडम. हॅलो, येतं ऐकू ना? हो हो. बेसिकली मला ना रिसर्च मध्ये इंटरेस्ट आहे. माझं वय आता 52 आहे आणि मी एक MA योगशास्त्र पूर्ण केलेलं आहे KJ सोमय्या मधनं. मला सॅटर्डे संडे साठी जर काही रिसर्चचं काम मिळालं तर करायला आवडेल. माझा मेन इंटरेस्ट आहे ना की हे जे टीनेजर मुलं आहेत ते बऱ्याच वेळा घरात ॲडॅमंटली वागतात आणि त्यांना जर आपण काही म्हणजे योगा करा वगैरे सांगायला गेलं तर बिलकुल करत नाही. म्हणजे त्यांना आपल्याला जे करायला पाहिजे ते खूप वेगळ्या पद्धतीने हँडल करावं लागतं. तर ह्याच्यासाठी जर काही रिसर्च होत असेल तर त्याच्यामध्ये जॉईन व्हायला पण मला आवडेल. आणि मेन म्हणजे माझं आहे इच्छा आहे मनापासून की काहीतरी योगामध्ये रिसर्चचं काम मिळावं मला. तर यासाठी तुम्ही काही गाईड करू शकाल का? हो हो, मी गाईड करू शकेन. आपण म्हणजे हे तुमचा जो पर्सनल इंटरेस्ट म्हणजे फॉर अदर पीपल ऑल्सो इफ दे हैव सम आइडियाज अबाउट देयर रिसर्च, जैसे मैंने कहा कि वी आर कमिंग अप विद द प्रयास where we will entertain or we will support all kind of researches, we will listen at least. और listening में क्या होगा, you will come with the problems. तो problems लेके आएंगे ना आप लोग, तो वो उसके ऊपर हम काम करना शुरू करेंगे. And I have team, मेरे पास टीम है क्योंकि इतने साल से अभी इस फील्ड में हूँ, इतने सारे स्टूडेंट हैं, तो वो टीम अभी बन चुका. और स्टूडेंट मतलब क्या है, वो मेरे से भी बहुत सीखे हुए और बहुत सारी पदवियां जिनके पास ऐसे स्टूडेंट है, तो ये टीम है मेरी. तो उसमें डेफिनेटली आपके जो भी ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे रिसर्च के वो हम उसके ऊपर काम करेंगे. यस डेफिनेटली. तो पर्सनली मला काही असेल तर सांगा. चालेल चालेल, तुम्ही मला पर्सनली जर पिंग केलं तरी चालेल, मी सांगेन तुम्हाला. ओके, धन्यवाद. थँक्यू. अभी मेरे ख्याल से वी हैव ओपन्ड दिस गेट. अभी आप लोगों को थोड़ा सा और आइडियाज आना शुरू हो जाएगी. तो आई एम देयर ऑलवेज विथ यू ऑल. तो आप कभी भी मतलब टाइम देख के कभी भी थोड़ा सा पिंग कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, तो मैं उसके ऊपर आपको गाइड करना चाहती हूँ. और इट इज अ विन-विन सिचुएशन. इट्स अ लर्निंग टुगेदर. इट इज गोइंग फॉरवर्ड टुगेदर, राइट. जाधवांचा पण प्रश्न आहे याच्यात आहे का अबाउट योगा टुरिझम. Can you please highlight more on yoga tourism? Yes, Praveen. Tourism जैसे as we are in India, और इंडिया में कितने टूरिज्म प्लेसेस हैं और उसके बारे में हमें पता है. अभी ये योगा टूरिज्म में कैसे कर सकते हैं हम? Obviously we need a backup proper, we need a place where और प्लेस फाइंड आउट करना भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है आजकल, बराबर है कि नहीं. सो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके पास प्लेस है, जगह है, लेकिन उनके पास टीचर्स नहीं है या उनके पास एक प्रॉपर मॉड्यूल नहीं है या प्लान नहीं है. तो ये हम दोनों साथ में आ सकते हैं, जहां पे वी विल फाइंड आउट अ प्लेस, वी विल फाइंड आउट अ पीपल, या हमारे ही जो स्टूडेंट है. शुरुआत कैसे करना है, तो आपके ही कुछ स्टूडेंट है, आपके साथ अगर 10 लोग हैं जो आपको सुनते हैं, दे रिस्पेक्ट यू बीइंग अ योगा टीचर, तो उनको आप ये एक थीम दे सकते हैं कि दिस इज अ थीम फॉर योगा टूरिज्म वेयर वी विल टेक यू आउट ऑफ योर हाउस और आउट ऑफ योर सिटी. और जरूरी नहीं है बहुत दूर लेके जाना, उनके बिल्डिंग से बाजू के बिल्डिंग में भी आप लेके गए ना तो भी वो टूरिज्म ही समझा जाएगा. समझो आप, मैं बता रही हूँ. सो दैट मीन्स व्हाट, आपका रोज का घर छोड़ के जहां आप रहते हैं, जहां पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हमें जाना है. और लोगों को अच्छा लगेगा अगर आप थोड़ा सा उनको दूर या एक कुठल्या अशा छान निसर्गरम्य ठिकाणी वगैरे घेऊन गेलात तर. और मुंबई से नजदीक भी ऐसे बहुत सारे प्लेसेस है टू स्टार्ट विथ. अगदी म्हणजे आता मी ठाण्यात राहते, माझ्यापासून अगदी 1 किलोमीटरवर येऊर हिल्स आहे. असं म्हणजे येऊर हिल्स में जाने के बाद लगता ही नहीं कि इतने नजदीक है हम ठाणे से. तो वहां पे भी बहुत सारे ऐसे हाउसेस है, वहां पे भी प्लान हो सकता है. या आप जहाँ रहते, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो वहां पे आप टूरिज्म का प्लानिंग कर सकते हैं. लेकिन आपके पास उसका नहीं चाहिए कि इफ इट इज फॉर 2 days, देन व्हाट इज द शेड्यूल फॉर पीपल, उनका फूड, उनका स्टे, हाइजीन, देखो ये सब चीजें आती है उसमें. इट इज नॉट लाइक जस्ट गोइंग एंड डूइंग पिकनिक. तो हमें ये प्लान करना पड़ेगा. और मैं तो कहती हूँ प्रवीण जी, अगर आपने पूछा है तो मैं चाहती हूँ
कि आप ना इसके ऊपर रिसर्च है, योगा टूरिज्म पे भी रिसर्च हुआ है, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग वो रिसर्च पेपर पढ़ो। तो मोबाइल का यूज बहुत बार हम सिर्फ बाकी का सब चीजें देखने में करते हैं, रील्स देखने में, उससे अच्छा गूगल में, गूगल स्कॉलर में आप रिसर्च पेपर्स ढूंढो जो आपके मन में टॉपिक है, एंड द टॉपिक विच इज नॉट गिविंग यू कंफर्ट, विच इज पुटिंग यू इन कंफर्ट, जो आपको रात को सोने नहीं दे रहा है, ऐसा विषय जो है आपके दिमाग में, उसके ऊपर रिसर्च करो, उसका रिव्यू करो, आप ढूंढो क्या लोगों ने काम किया है। बस 2-3 मिनिटाचं काम आहे, तुम्ही त्याच्यात आपोआप घुसाल. आलं लक्षात प्रवीण? Okay, so we will stop here for today. बहुत सारी अभी चीजें हैं जो बताना शायद मेरे से रह गया होगा, जैसे मैंने कहा था जॉब अपॉर्चुनिटीज, प्रोफेसरशिप के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए यू कैन अप्लाई, आफ्टर योर PhD यू कैन अप्लाई फॉर प्रिंसिपलशिप इवन इन स्कूल्स, जरूरी नहीं है कि कोई योगा का ही रिलेटेड हो, तो ऐसे सब अपॉर्चुनिटीज आपको ढूंढनी है ना। दैट्स ऑल, वी विल स्टॉप हियर फॉर टुडे। अभी हम रुकते हैं आज के लिए, एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक्स। Thank you very much, everyone. This was 14th Yogaarthi, and the next month we already have planned. So I would like to announce that we are going to have our next Yogaarthi session on 24th of March. Okay, and I will see you on 24th March, of course, for that session with another interesting topic. Okay. Thank you. Okay, see you again then. Bye. Thank you.